Good day, dear students. I'm Amir Hafiz Malik, and our topic for today is one of the most important topic of grammar and the art of reading skill and examination. We all believe that at graduation level, at undergrad programs, at master level programs, even at the competitive examination level, the reading comprehension is one of the most important topics. So that is our topic for today. I'll be talking about reading comprehension. If you look at the topic, it has 2 points in it. Number 1 is reading and number 2 is comprehension. So there is a complete system of reading comprehension. There is a complete mechanism of reading comprehension. There is a complete process of reading comprehension, and it is very important. And I personally believe if you learn the art of reading comprehension, you can be a very good reader. But more significantly, buy one and get one free offer is by learning the reading comprehension, you can easily become a very good writer as well. Reading comprehension develops your creative writing skills as well. So let's talk about reading comprehension, and first of all, I would love to give you the concept of reading comprehension. The one-liner is that it is complete understanding of a text. It is the complete understanding of the material which is given to you for reading. Reading comprehension is the ability to read the text, understand its meanings, and to reproduce information by writing answers to the given question. If you look at this definition, we get 3 major ideas in it. Number 1, it is the ability to read the text. Now we should know that there is an art, there is a skill needed. There should be a quality of reading the text. Reading the text is not simply going through the words or looking at the words or knowing the words, it is understanding them. So number 1 is ability to read. Number 2 is understand its meaning. Whatever information, whatever knowledge, facts, figures, ideas, feeling, thought, emotions, comparison, contrast, the textures, one has to know and understand them. And finally, reproduce that by writing the answers of the given question in one's own words. So 3, read, understand and reproduce. These are the 3 major components of the concept of reading comprehension. So any reader with these 3 qualities, the ability to read, to understand the meaning and reproduce the information in the form of answers, can be called expert of reading comprehension. There are 3 steps of reading comprehension. Number 1 is reading the text, that is getting information from the written material or the content or the text or the page or the book which is given to you to read. Number 2 is understanding or interpreting. Yes, number 2 is understanding, knowing what is there, and interpreting, explaining, having the detailed about those information. And number 3 and final is answering or reproducing. So this third completes the process of the reading comprehension: read, understand and answer or reproduce the information. There are 2 components of reading comprehension. Number 1 is the passage, which is the text, which is the content or which is the given information by the writer, which is in the printed form or which is there on the electronic screen. So therefore the passage is number 1 component, and number 2 component is question answer. In our examination system, we have this, that there is a passage and at the end of the passage questions are given, and sometimes in multiple choice comprehensions you are also given the answers and you have to pick the correct choice. So question answer deals with reader's response, the understanding and reproduction of the information shared in the form of the passage or the text. There are 2 types of reading comprehension. Number 1 is called the objective type, which is in the form of the MCQs, and the options are given and the candidate or the student has to just pick and tick the correct option, choose the correct answer of the given answers. And you can see on the diagram there is a picture of the passage, and after that there is a question and 4 options are given. Second type of reading comprehension is called the subjective type reading comprehension, which has the subjective style, and in this the answer are detailed. They are written by the candidate or the student in the form of answer. So one has to write the answer in his or her
own words and in a detailed way. And the image of the paragraph shows you that there are questions and then there are blank lines for the individual candidate or the student to write the answers. Next, we'll be dealing with the 4 strategies of reading comprehension solution. The first to deal with the passage reading. So in order to develop the quality of reading, one has to focus on skimming, which tells you the gist, helps you to get the main idea of the text. So one has to have the quality of skimming the text. And number 2 is scanning the text, get the specific information. If the reader of the comprehension passage has these 2 basic skills of reading, one can easily and quickly read and understand the passage. Number 3 and 4 strategies deal with answering the question. Number 1, which is number 3 for the answer, is reading questions first, then passage. So this technique is very popular, very effective, very useful, that first read the question and then read the passage. Do not read the passage first and then the questions, because it is believed that by reading the question first, you get the information, you get the idea about the passage, the content or the written material. So if you read the question first, then it can become very easy for you to answer the question. Number 4 is mark the answers, underline the keywords, phrases and write answers, use own words. So if you have these 4 strategies in your hand, you can easily solve the reading comprehension passage and you can become an expert reading comprehension solver. Reading tips are: be a good reader, and I have already talked about a good reader who knows the art of reading. And reading is not just looking at the word, it is the act of skimming, scanning, prediction, having questions in mind before reading. Number 2, understand the text or the passage. Number 3, read question first, passage second. Next is use sub skills of reading, which are interpreting, which are predicting, which are guessing. So there are different sub skills of reading for good readers. These are very important. Mark the answer. Yeah, this is very important, that in the paragraph the answers are given and the student has to learn the art of marking the question, and I am talking of the area or the lines or the sentences which are related to the answers. Next is use your own words. It is not copying and pasting, it is writing in the own words. Next, keep yourself in the passage. Don't go away, because the passage is there, the written content is there, the material is there. You just have to go for finding and understanding the information. The information is there. Do not go away from the text, live within the text. This is very, very important. Finally, understand the writer's message, tone and style. Focus while you're reading a text. Focus on the writer's message, what information is being shared, what tone is there, what style of writing is there. Next, dealing with the passage reading, I would talk about the 3 things I have always talked in my writing skill videos, that there are 3 parts of every writing. Number 1 is called introduction, which is the opening and which has the topic, sentence and the main ideas for the paragraph. You have to mark first 5 lines or sentences to be the introduction reader. Number 2 is the body, which is the explanation. It contains example, details, graph, charts, figures, data, comparison and other things. Finally, number 3 is conclusion, which is closing, summing up and end. And to know that, you have to focus on the last 3 lines or the last 3 sentences. I would love to quickly talk about some of the important tips. Number the lines of the passage. Once there is a passage for you to mark them, maybe there are 10 lines, 15, 20, 30 lines, mark the lines, give number to them. To read the passage attentively, pay attention to what you are reading. Next is pay more attention to opening and ending, introduction and closing information of the passage. Skim the passage to get the main idea. Scan the passage to get specific information. That is, take what is important and leave what is not important. Next, read or underline the key points. Make predictions and inferences. Prediction is telling before and inferences is get the hidden meanings. Finally, do not pay attention to every word. Just go for skimming and specific information only. Remember, you do not have to cram the whole passage. Rather, you have to focus on the demand of the examiner, which is the answer of the question, and answers may be of the 5 sentences out of the 15 sentences passage.
Dealing with answering the question, this is very important because this has more demands as compared to just reading. First, read the questions and then read the passage. Read, understand and analyze the question. Don't make hurry. Mark the answer lines and sentences in the passage. This is I have already talked about. For example, answer 1 is in line number 3 and 4. So mark those 3 and 4 lines only. Forget about the rest of the lines of the passage. Underline the answer line sentence in the passage. To fix that, you have to underline line 3 and 4 for answer 1. Write the answer in your own words. Since you've got the lines fixed up, now you can easily use your own word or replace the words or rephrase or restructure the sentences and get your own words. Next, do not just copy and paste from the passage. This is a crime. This is negative. This is not allowed in very good reading comprehension skills. Do not copy and paste from the passage. Finally, check and correct the answer, relate the answer to the question. Make sure that the answers are relevant and they are up to the mark and they are up to the demand of the examiner. Finally, I am offering you the 2 passages. Look at them. They are, number 1 is a MCQs based passage. I have called it. The options and the answers are given there. Read the passage and match the information. This is model paragraph number 1. This is model reading comprehension passage 1, which is based on MCQs with the given answers. Number 2 is a model reading comprehension passage which is based on subjective style. You have been given the paragraph and you have been given the question, but over here I have solved it for you to tell you how the answers are given. So these 2 model reading comprehension passages are for you to pay attention to them, to practice and to learn how to answer this question. I hope this lecture would be useful and informative for you and you will be benefiting a lot from this. Thank you so very much. आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की और मेरे लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेहद अहम सवाल है, इसलिए कि इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, तलबा और तालिबात, नए जानने वाले लर्नर्स रीडिंग का स्किल या महारत सीख जाते हैं, पढ़ने का तरीका सीख जाते हैं और दूसरा साथ साथ राइटिंग यानी तहरीर की महारत भी उनके अंदर आ जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तारीफ में ये सलाहियत है टेक्स्ट पढ़ने की, नंबर 2 ये सलाहियत है उसके माने जानने की और ये सलाहियत है सवालात के जवाब देने की, यानी जो कुछ समझ आया है उसे जवाबात में आप जाहिर कर देते हैं। 1 लाइनर में मैंने कहा था कॉम्प्रिहेंशन से मुराद मुकम्मल तफहीम समझ बूझ होती है। फिर मैंने 3 स्टेप बताए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। पहला पढ़ना होता है यानी मालूमात हासिल करना होता है, फिर समझना होता है, तशरीह वजाहत करनी होती है और तीसरा होता है जवाब देना या दी गई मालूमात को अपने अल्फाज में दोबारा बयान करना। 2 कंपोनेंट्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। पहला पैसेज यानी दिया गया पैराग्राफ या पैसेज होता है, इसमें टेक्स्ट होती है, इसमें मवाद होता है तहरीरी, इसी में मालूमात दी जाती हैं और दूसरा हिस्सा सवालात का होता है जिसके जवाबात दिए जाने होते हैं। इसे हम पढ़ने वाले का रद्द-ए-अमल कहते हैं, समझ बूझ कहते हैं और कितनी मालूमात वो जहन में रख सकता है और बयान कर सकता है, इससे वो भी टेस्ट हो जाता है। 2 तरह की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। पहली को हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, इसमें MCQs का स्टाइल होता है यानी पैराग्राफ के बाद पैसेज के बाद उसके ऑप्शंस MCQs की शक्ल में दे दिए जाते हैं और उम्मीदवार या तालिब इल्म को सिर्फ उनके ऑप्शन को टिक करना होता है, सही पर निशान लगाना होता है। दूसरी तरह सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन होती है, सब्जेक्टिव टाइप, इसमें खुद से जवाबात लिखने पड़ते हैं, सिर्फ सवालात दिए जाते हैं और तफसीली जवाबात अपने अल्फाज में लिखने पड़ते हैं, इसे सब्जेक्टिव टाइप का नाम दिया जाता है। फिर 4 स्ट्रेटजीज हैं। पहली 2 जो हैं वो पैसेज पढ़ने के मुतालिक हैं और दूसरी 2 जो हैं वो जवाबात देने के मुतालिक हैं। पहली स्किमिंग स्कैनिंग है। स्किमिंग से मुराद निचोड़ ढूंढ लेना, मेन आइडिया जस्ट खाका ले लेना और स्कैनिंग से मुराद है खास मालूमात हासिल करना। आंसरिंग क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि पहले सवाल को पढ़ना है, पैरा बाद में पढ़ना है और फिर इसके साथ साथ चौथे नंबर पर आपने सवालात को अंडरलाइन कर लेना है, अहम अल्फाज को, और फिर अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। टिप्स में आपके लिए अच्छा रीडर होना बड़ा ज़रूरी है, पैसेज की समझ आना बहुत ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन और फिर पैसेज पढ़ना चाहिए, रीडिंग के सब स्किल होते हैं उन्हें इस्तेमाल करना आना चाहिए, आंसर्स को मार्क करना चाहिए, अपने अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, पैसेज को अंदर ही रहना चाहिए, पैसेज के उससे बाहर ही जाना चाहिए। जो कुछ मुसन्निफ ने कहना था वो उसी पैसेज के अंदर वो कह चुका है, लिहाजा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर अपना वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली से था मुसन्निफ ने उसमें क्या पैगाम दिया, उसका अंदाज़ कैसा था, वो क्या कहना चाहता था, ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है।
तो इससे पैराग्राफ को हल करना बड़ा आसान हो जाता है। पैराग्राफ को पढ़ने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम करना बड़ा ज़रूरी है। पहला हिस्सा तारुफ का होता है, दूसरा बॉडी का होता है जिसमें वजाहत तफसीलात होती हैं, और तीसरा कंक्लूजन या इख्तितामिया होता है जिसमें ख़त्म की जाती है बात को। तो इसका तरीका ये है कि आप पैरासेज को सबसे पहले लाइन के नंबर लगा लें, 10, 15, 20 जितनी भी लाइन्स हैं उनको 1, 2, 3, 4, 15, 20 का नंबर दे दें। फिर तवज्जो से पढ़ें, फिर सवालात उस पैसेज के पहले और आखिरी हिस्से पर, इब्तदाई और आखिरी लाइनों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर। फिर स्कीमिंग करें ताकि आपको मफहूम थीम समझ आ जाए। फिर आप स्कैन करें क्योंकि आप सवाल पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि उसमें से क्या पूछना चाहता है। तो जो अहम बातें हों वो अपने जहन में रख लें, जो गैर ज़रूरी हैं उन्हें छोड़ दें। फिर पढ़ते हुए आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें। फिर आप खुद से पेशीन गोई करें और इन्फरेंस से मुराद ये है कि छुपी हुई मालूमात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। और आखिर में आप हर लफ्ज़ पर तवज्जो मत दें। आपको पैराग्राफ को रट्टा नहीं लगाना है बल्कि कुछ मुफीद मालूमात चाहिए। हो सकता है 20 लाइन के पैराग्राफ में जवाबात सिर्फ 6 लाइन्स के बनते हों तो आप आसानी से बाकी लाइन्स को छोड़ सकते हैं। सवालात के जवाब देने के लिए सबसे पहले आप सवाल पढ़ लें, फिर सवाल को पढ़ना आना चाहिए, समझना और उसका तज्जिया करना आना चाहिए, लाइंस और सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये बहुत ही बुरी और गलत बात होती है और इसके नंबर भी नहीं मिलते हैं। और आखिर में जो जवाबात लिखे हैं उन्हें सवाल से मैच कर लें, मिला लें कि जो पूछा गया था जवाब में वही लिखा गया है। गैर ज़रूरी या गैर मुताल्लिका बातें तो नहीं लिखी गई हैं, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया गया। 2 मॉडल मैंने पेश कर दिए। पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का MCQs अंदाज का पैसेज है, मैंने इसे हल भी कर लिया आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो सब्जेक्टिव स्टाइल का है। इसमें पैराग्राफ के बाद सवालात दिए गए, उसके जवाबात भी आपके लिए मैंने लिख दिए ताकि आसानी से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। थैंक यू सो वेरी मच।